Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is air pollution and its causes. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है एंड इसके डिफरेंट कॉजेज क्या है. As we are all aware about the fact that atmosphere or air, it is one of the important components of our environment. It plays a significant role for the sustenance of life on this blue planet. But since from last few decades, this air it has lost its quality or it has got degraded due to some undesirable change, due to the addition of some unwanted substances or the harmful substances, and this is what we say today. It is negative consequences in the form of global warming, in the form of loss of the cultural assets, and in the form of the change in rainfall patterns. So let us see what is this air pollution. Actually, the air pollution it can be defined as an undesirable change in the physical, chemical, or the biological aspects of the atmosphere, which has harmful effects on the life of man, life of other desirable species, and our cultural assets. And this air, it gets polluted, it gets contaminated due to the addition of some unwanted, foreign, and harmful substances. So let us try to find out the various causes which are responsible for this atmospheric pollution or the air pollution. जब हम बात करेंगे कि इसके डिफरेंट कॉजेज क्या है, ब्रॉडली हम इसके कॉजेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज नोन एज द नेचुरल one is known as the natural causes and the other is the anthropogenic causes. Let us try to understand what are the various sources which add these actually air pollutants naturally, and what are the different sources where from these pollutants of air gets added by the human or by the human activities. So let us try to understand them. So first we will see the causes of air pollution. एयर पोल्यूशन के कॉजेज को या एयर पोल्यूशन के सोर्सेज को हम दो मतलब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज नोन एज द नेचुरल sources and another is known as the anthropogenic sources. Natural sources, these are those sources where the pollutants get added to the atmosphere through the natural activities or through the natural processes or by means of the natural phenomena. तो पहला अगर हम देखेंगे नेचुरली वॉल्केनिक एरप्शन. वॉल्केनिक एरप्शन यू नो, वॉल्केनिक एरप्शन आतश फिशां का फट जाना, मतलब ड्यूरिंग द volcanic eruptions, in addition to the release of the lava, the here the hot gases, steams, volcanic ash is also released, and these hot gases, these include the oxides of sulfur, nitrogen, carbon, and these also includes these मतलब some मीथेन भी वहाँ से निकलता है. तो ये सब के सब क्या होता है, दे आर वेरी मतलब जब ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, इनसे एटमॉस्फेयर में मतलब जो पोल्यूशन के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं. वोल्केनिक इरप्शन भी एक फैक्टर है, दैट इज अ नेचुरल फैक्टर which is responsible for causing the air pollution. देखो इस वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान क्या होता है कि एक तो वहाँ से लावा रिलीज होता है, इसके अलावा हॉट स्टीम भी वहाँ से रिलीज होता है,
वहाँ से हॉट गैसेस रिलीज होते हैं, इस तरह वॉल्केनिक एशेस भी वहाँ से निकलती हैं। ये सब के सब फिर क्या करते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और वहाँ पे इसकी क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। इतना ही नहीं कि अगर हम ये देखेंगे कि वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, यहाँ पे वोग फॉर्मेशन भी होती है। वोग, दिस वॉल्केनिक वोग फॉर्मेशन, व्हाट इज वोग? Basically, this vogue, it is the portmanteau of two terms. One is the volcanic plus smog. ये दो टर्म्स की कॉम्बिनेशन होते हैं दिस वॉग, एंड दिस वॉग गेट्स फॉर्म्ड ड्यू द रिएक्शन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड and other gases with the oxygen and the moisture. तो इससे फिर ये वॉग फॉर्मेशन भी होती है। यू नो द मोस्ट डेंस टाइप ऑफ द वॉल्केनिक एरप्शंस, दे आर नोन एज द ग्लोविंग एवालांches. Glowing avalanches. This is the one of the natural factor which is responsible for causing this air pollution. The second one is the electric storms and solar flares. Electric storms, these include the lightning and the thunderbolts, and the electric flaring, जिसको हम शमसी तूफान भी कहते हैं. Basically, this is a sort of phenomena which is observed in the sun's atmosphere. यहाँ पे क्या होता है? Here the actually glowing these glowing flashes of bright light gets released. Both these that is electric storms and solar flares, they actually add many harmful gases to the atmosphere. Yeah, many harmful gases get formed due to the electric storms and the solar flares. So this is another. And the other cause, other natural cause for the air pollution is the forest fires or the wildfires. Wildfires. देखो, how these forests they get they actually they get fire, or actually they get combusted, or they get actually they catch the fire. And there are so many reasons. One reason is that sometimes the surrounding temperature gets increased, or sometimes due to the heat waves, and the fire gets catch spontaneously, and as a result of this burning of these forests, उस दौरान क्या होता है, जब जंगलात जो है इनको आग लग जाती है, बहुत सारे जो, क्योंकि जंगलात के अंदर मतलब इन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारा कार्बन कंटेंट होता है. जब इसकी कंबशन होते हैं तो बहुत सारे मतलब गैसेस वहां से रिलीज होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, even some greenhouse gases like methane, oxides of nitrogen, they get released, they get added to the atmosphere. Apart from that, lot of fly ash gets added into the atmosphere. तो ये भी हमारे atmosphere को pollute करते हैं. This is the another actually natural phenomena or natural process which is responsible for actually causing the air pollution. Dust storm. Dust storm, basically when there occurs the dust storms, तो उस वक्त क्या होता है, बहुत सारे पैथोजेन्स, बहुत सारे स्पोर्स, इवन वायरसेस, they actually are balloon into the atmosphere, they get added into the atmosphere. वहाँ पे क्या होता है, and this you know, इनमें से बहुत सारे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ये स्पोर्स, पोलन ग्रेन्स होते हैं, they are actually pathogenic, they can cause several diseases then. So this is another actually natural cause of the air pollution. Another one is marsh gas. You know the natural gas, methane, CH4. इसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं.
Actually, this natural gas, this methane or the marsh gas, it gets produced or it is formed due to the decomposition of the organic matter, like vegetative matter, like vegetation matter in the wetlands. वहाँ पे क्या होता है, जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, ये वहाँ से बनता है. समटाइम्स इट इज आल्सो फॉर्मड ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड बाय द कैटल्स, वहाँ से भी ये रिलीज होता है. समटाइम्स द मीथेन इट गेट्स रिलीज्ड आउट और इट गेट्स सीप्ड, it is getting seeped out from the underground deposits. And you know this methane, it is considered one of the potent greenhouse gas. तो ये भी एक factor है which is responsible for causing the air pollution, that is marsh gas formation. And another one is natural contaminants. These contaminants, these include the spores, pollen grains, द वायरस, सम बैक्टीरिया, ये सब के सब भी आयर में ऐड होके इसकी क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं. इसके मतलब इसको अनडिजायरेबल, इसमें अनडिजायरेबल चेंज ये लाते हैं. तो इसको हम कहेंगे नेचुरल कंटेमिनेंट से भी हमारा एयर पोल्यूट होता है. इसी तरह नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, तो उससे भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मतलब हमारे एयर में चले जाते हैं और इसकी क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं. दीज आर फ्यू ऑफ द नेचुरल कॉजेज व्हाई द एयर गेट्स पोल्यूटेड बाय द नेचुरल फिनोमेना, बाय द नेचुरल एक्टिविटीज, बाय द नेचुरल प्रोसेसेस. Here the another category of the causes is the anthropogenic sources, or here the pollutants are added to the atmosphere by the human activities, by the human activities. तो उसमें पहले एक्टिविटी अगर हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन. देखो ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, इसमें शिप्स भी आएंगे, ट्रेन्स, हमारे ऑटोमोबाइल्स, इसमें शिप्स भी आएंगे. तो ये सब के सब क्या हो करते हैं बेसिकली. अगर हम देखेंगे कि since from last few decades, the number of these automobiles, the number of buses, trucks, three-wheelers, they have got increased. Their number has increased tremendously. And all these motorized vehicles, they actually use the fossil fuels. They use the fossil fuels. तो उस दौरान क्या होता है कि this combustion of these fossil fuels in these motorized vehicles, they actually release lot of smoke, lot of carbon monoxide due to its incomplete combustion sometimes, and carbon dioxide, oxides of nitrogen, they all get added into the atmosphere, and which they are very detrimental, they are very harmful to the atmosphere, and which equally poses the threats to the life of the organisms on the earth. तो ये भी एक cause है इसका, जिसको हम कहेंगे transportation. Another cause of this air pollution, which is caused due to the human activities, is the industrial process. Industrial processes, stems from the revolution of the industries, or stems from industrial revolution. A network of the industries have got established in every nook and corner of the world, in every region of the world. As a result of this network, as a result of the network of these industries and factories, a lot of these poisonous substances are released there, which are getting added into our atmosphere. The industries like refineries, paper mill industries, steel industries, and there are so many types of the industries. So all these types of the industries, they use the fuels actually, and during the burning or during the combustion of these fuels, lot of poisonous gases are released, which gets added in our atmosphere, thereby changing the quality of the air.
तो एक और ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक इसका काज है, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। देखो सॉलिड वेस्ट को हम डिस्पोज करते हैं, देयर आर सो मैनी मेथड्स। किसी वक्त हम बिल्कुल ओपन बर्निंग करते हैं, इनको जलाते हैं इन द ओपन एटमॉस्फेयर, तो उस दौरान भी बहुत सारा वहां से स्मोक प्लस पॉइजनस गैस वहां से रिलीज होते हैं डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। तो एक और मतलब जो कि हम इंसिनरेशन प्रोसेस करते हैं, उस दौरान भी बहुत सारे पॉइजनस गैसेस रिलीज होते हैं। या जो हम कहते हैं ना वो सैनिटरी लैंडफिल्स, उस दौरान भी बहुत सारे गैसेस सीप आउट होते हैं, जिसमें मीथेन भी होता है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। देखो मतलब जितनी भी ये हाँ हाँ, अगर हम देखेंगे कि जो एक मतलब दिस इज द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर causing the pollution of the air, for मतलब it is also responsible which responsible for air pollution। तो यहाँ पे एक और काज है, फ्यूल कंबशन फ्रॉम स्टेशनरी सोर्सेज लाइक पावर प्लांट्स। जो थर्मल पावर प्लांट्स होता है वहां पे भी फ्यूल्स यूज होते हैं, कोल का इस्तेमाल होता है, तो उस दौरान भी बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, मीथेन वगैरह वगैरह। ये मतलब जो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होते हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, वहां जाके ये रेन के साथ मिलते हैं और वहां पे एसिड्स बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो जिस एंड द रेन फॉल्स एंड द प्रेसिपिटेशन occurs in the form of the acid rains, which have the devastating effect upon the all sorts of the life on the earth। तो ये भी एक काज है कि जिसको हम कहेंगे ना फ्यूल कंबशन एंड द स्टेशनरी सोर्स लाइक पावर प्लांट्स। एक और कॉज है मैसेलिनियस, मतलब मैसेलिनियस सोर्सेज में क्या आते हैं? मैसेलिनियस सोर्सेज भी जो दीज और आल्सो एक्चुअली द सोर्सेज where the human activities are responsible for this air pollution, like जो हमारे हाउसेज हैं, जो हमारे ऑफिस हैं, चाहे रूरल एरियाज में चाहे अर्बन एरियाज में, ये यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। मतलब घरों में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे मतलब कुकिंग के दौरान मतलब काउडंग का भी इस्तेमाल करते हैं, वुड का भी इस्तेमाल करते हैं, गैस स्टोव्स का भी इस्तेमाल, उस दौरान भी बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐड होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। वो दिस इज रिगार्डिंग द मैसेलिनियस सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था, यहाँ पे इसमें जो डस्ट स्टॉर्म्स, यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज में एक पॉइंट ऐड करूँगा कि जो ये डस्ट स्टॉर्म्स हैं, there has occurred one of the historical this dust storm, or this is known as the Black Dust Sunday, and it has taken place in 1930 14th April 1935 in Oklahoma, तो यहाँ पे ये एक उसको कहते हैं ब्लैक Dust Sunday, which generally has taken place on 14th of April 1935 Oklahoma। So these were the different, actually these were the different causes of this air pollution। तो नेचुरल causes भी हमने देखे, एंड इस तरह हमने देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक causes। तो एक और मतलब मतलब हम ये कहेंगे कि एक और मेथड है जिससे हम इन सोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। दीज आर नोन एज द स्टेशनरी सोर्सेज एंड द मोबाइल सोर्सेज। स्टेशनरी सोर्सेज क्या होते हैं? यहाँ पे किसी खास जगह पे, किसी खास पॉइंट पे, किसी खास एरिया में कोई सोर्स होता है, वो वहाँ पे ही स्टेशनरी रह के वहाँ से मतलब दीज पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। दीज स्टेशनरी सोर्सेज, दे कैन बी पॉइंट सोर्सेज, दे कैन बी
figurative sources, there can be some area sources. Suppose अगर हम कहेंगे point sources, these point sources में क्या होता है, these are some identifiable points like chimneys and stakes of the factories. वहाँ पे उन्हीं पॉइंट से मतलब जो वहाँ से वो एग्जॉस्ट निकलता है बाहर, वो उसके जरिए से बहुत सारे पॉइजनस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ सोर्सेज, इनको हम कहते हैं फिगिडियो। सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं कि ये एक्चुअली ओपन एरिया में होते हैं। मतलब ओपन एरिया में होके यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो निकलेगा वो चमनीज या स्टेक्स के जरिए से वापस नहीं मतलब रिलीज नहीं होगा, वो वहाँ पे ओपनली मतलब लैंडस्लाइडिंग या सॉयल इरोजन होता है। तो ये मतलब इसमें आते हैं, या किसी वक्त जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलते हैं उस दौरान भी जो वहाँ से डस्ट या कुछ पॉइजनस सब्सटेंस निकलते हैं और एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं, वो किस में आएंगे, फिगिडिव सोर्सेज में। दीज आर आल्सो द स्टेशनरी। तो इसी तरह एक और है जिसको हम कहते हैं एरिया सोर्सेज। These area sources, basically these are the sources where the pollutants are produced, which diffuse throughout that area. उस पूरे के पूरे एरिया में ये फिर डिफ्यूज होते हैं। तो उसमें हम क्या कहेंगे कि उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग होते हैं, हर्बिसाइड स्प्रे, तो ये सब रेस्पॉन्सिबल हैं किसको, एयर को, मतलब एयर के पोल्यूशन को या एयर को पोल्यूट ये करते हैं ये एक्टिविटीज। इसी तरह दूसरा मैंने आपको बताया था मोबाइल सोर्सेज। दीज आर दो सोर्सेज where the source which is emitting these air pollutants, they are not stationary, they are running, they are moving from one place to another place. इसमें आपको मतलब पता है कि कौन से इसमें आएंगे। इसमें ऑटोमोबाइल्स आएंगे, इसमें आएंगे ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इसमें शिप्स भी आएंगे, जितने भी मोटराइज्ड व्हीकल्स है। So this is all about today's topic, that is the what is air pollution, or what is the atmospheric pollution, and what are its different causes. So today we will conclude here, and inshallah in the next topic we will take the actually effect these air, what are air pollutants, different types of the air pollutants. So thank you today.